इंडिया और चाइना दो पुराने सिविलाइजेशंस एशिया में जायंट्स हैं। ये पेडिडोसी हैं जिनके कल्चरल रूट्स सेम हैं और हिस्ट्री हजारों सालों से इंटरट्वाइंड है। दोनों नेशंस अब ग्लोबल स्टेज पर मेजर प्लेयर्स हैं। देयर इकोनॉमीज बूमिंग, देयर मिलिट्रीज मॉडर्नाइजिंग एंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सपैंडिंग। फिर भी देयर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा है, अ ब्लेंड ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन, एमिटी एंड एनिमोसिटी। इंडिया और चाइना के बीच का ये इंट्रिकेट बॉन्ड ग्लोबल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। देयर इंटरैक्शंस के रिपरकशंस सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर पर भी है। इस डायनामिक को समझने के लिए देयर शेयर्ड पास्ट, देयर प्रेजेंट डे चैलेंजेस एंड देयर फ्यूचर एस्पिरेशंस में डीप डाइव करना होगा। ये एक्सप्लोरेशन इंडिया चाइना रिलेशंस के हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी फेसेट्स में डेल्व करता है। ये उन थॉर्नी इश्यूज को एग्जामिन करता है जो उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ग्रोइंग इकोनॉमिक राइवलरी एंड फ्लक्चुएटिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट। ये कोऑपरेशन के एवेन्यूज को भी हाईलाइट करता है, like their participation in multilateral forums such as BRICS and RCEP. Ultimately, ये analysis is pivotal bilateral relationship का balanced and comprehensive view provide करने का aim रखता है। ये dialogue, diplomacy, and a shared vision for a peaceful and prosperous future for both nations and the world at large की significance को underline करता है। इंडिया और चाइना एक रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री शेयर करते हैं जो बुद्धिज्म, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज के थ्रेड्स से बुनी गई है। सदियों से द सिल्क रोड ने कॉन्ड्यूइट का काम किया है, फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिटवीन द टू सिविलाइजेशंस। बुद्धिस्ट मंक्स ट्रेचरस माउंटेन्स और वास्ट डेजर्ट्स को पार करते हुए अपने साथ स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग्स ले जाते थे, जिन्हें चाइना में फर्टाइल ग्राउंड मिला। This period of vibrant exchange ने mutual understanding and respect को foster किया। Chinese travelers, like the legendary Xuanzang in the 7th century, India venture करते थे, drawn by its renowned centers of Buddhist learning. Their chronicles उस समय के इंडिया के social, religious and political landscapes में invaluable insights provide करते हैं। इस shared heritage ने एक relationship के लिए foundation रखी जो periods of peaceful coexistence and fruitful collaboration से marked है। इसने a sense of kinship को instilled किया और cultural affinities को foster किया जो आज भी resonate करती हैं। However, the winds of change, particularly in the 20th century, नई challenges लेकर आए जिसने इस ancient bond की resilience को test किया। The mid-20th century में relations sour हो गए, primarily due to unresolved border disputes. The Himalayan frontier, spanning thousands of kilometers, contention का point बन गया, with conflicting territorial claims and perceptions of historical boundaries. ये discord 1962 Sino-Indian War में culminate हुआ, a brief but bitter conflict जिसने bilateral ties पर deep scar छोड़ा. Despite subsequent efforts to resolve the border issue, tensions have persisted. The line of actual control, LAC, the de facto boundary, disputed रहता है, with occasional skirmishes and standoffs erupting between the two militaries. ये incidents region में peace की fragility और a lasting solution की need के stark reminders हैं। Adding to the complexity is the strategic rivalry between India and China. दोनों countries अपनी armed forces को modernize कर रहे हैं, enhancing their defense capabilities and vying for influence in the Indo-Pacific region. ये competition, suspicion and mistrust को fuel करता है, hindering efforts to build a more stable and cooperative relationship. Even as political and security challenges simmer, the economic realm, burgeoning trade and investment ties की contrasting picture present करता है। China India के largest trading partners में से एक है, with bilateral trade volumes soaring in recent decades. Indian markets Chinese goods से भरे हुए हैं, from electronics to textiles, जबकि China India से raw materials and resources import करता है। ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन के लिए पोटेंशियल को अंडरस्कोर करता है। दोनों नेशंस एक दूसरे के वास्ट एंड ग्रोइंग मार्केट्स द्वारा प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। दे आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग वेज टू एनहांस ट्रेड फैसिलिटेशन, रिड्यूस बैरियर्स एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स। हाउएवर, दिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। इंडिया को चाइना के साथ सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पीटी देता है, a source of concern for policymakers in New Delhi.
concerns over market access, dumping of Chinese goods, and intellectual property rights भी economic horizon को cloud करते हैं. Addressing these issues is crucial to ensure a balanced and sustainable economic relationship. India और China के बीच political ties fluctuate हुए हैं over the years, mirroring the ebbs and flows in other aspects of their relationship. Periods of relative calm and engagement, phases of tension and estrangement से interspersed हुए हैं. High-level visits, summits and dialogues, communication and understanding को foster करने में instrumental रहे हैं. Despite these efforts, a trust deficit persists, stemming from historical baggage, ongoing disputes, and differing geopolitical perspectives. India-China की growing assertiveness in the region, particularly its expanding naval presence in the Indian Ocean, को apprehension से देखता है. China, on the other hand, India's deepening strategic partnerships with countries like the United States and Japan के बारे में wary है. ये differing threat perceptions, uncertainty के climate में contribute करते हैं, and complicate efforts to build a more stable and predictable relationship. दोनों countries को इन concerns को address करने की ज़रूरत है through open and frank dialogue, confidence-building measures, and a commitment to peaceful coexistence. Section 6. The BRICS Dynamic, a platform for collaboration. अपने bilateral ties में complexities के बावजूद, India and China multilateral forums like BRICS में common ground पाते हैं, which includes Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Emerging economies का ये grouping dialogue, cooperation, and coordination on issues of global significance, such as economic development, climate change, and international security के लिए platform provide करता है. BRICS के अंदर, India and China ने initiatives aimed at reforming global financial institutions, promoting sustainable development, and enhancing people-to-people exchanges पर collaborate किया है. उन्होंने a multipolar world order that reflects the aspirations of developing nations के लिए advocate करने में भी common cause पाया है. While their positions may differ on certain issues, their participation in BRICS, their shared interest in shaping a more equitable and inclusive global order को underline करता है. It also demonstrates their willingness to work together towards common goals, even as they navigate the complexities of their bilateral relationship. Section 7. RCEP, towards regional economic integration. The Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, एक और significant arena है, where India and China's economic interests intersect करते हैं. ये mega trade agreement, comprising 15 Asia-Pacific nations, aims to create a free trade zone encompassing nearly a third of the global population and GDP. While India opted out of RCEP in 2019 due to concerns over market access and potential damage to its domestic industries, China इस agreement में key player है. RCEP's implementation में regional trade patterns को reshape करने और Asia में economic integration को accelerate करने का potential है. India's decision to stay out of RCEP reflects its cautious approach towards free trade agreements and its focus on protecting domestic interests. However, it continues to engage with RCEP members through other mechanisms and explore avenues for economic cooperation in the region. Section 8. The China-Pakistan Factor. Cheen का पाकिस्तान के साथ close relationship adds another layer of complexity to its ties with India. Cheen और पाकिस्तान के बीच, the all-weather friendship, cemented by robust economic and military cooperation, is a source of concern for New Delhi. India's partnership, particularly the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC, को strategic challenge के रूप में देखता है. CPEC, a flagship project of China's Belt and Road Initiative, passes through Pakistan-administered Kashmir, a territory disputed by India. India's opposition to CPEC stems from its territorial claims and concerns about China's growing footprint in its neighborhood. Ye trilateral dynamic adds to the strategic mistrust between India and China. It underscores the importance of addressing the underlying issues, including the Kashmir dispute, to create a more conducive environment for bilateral cooperation. Section 9. Conclusion. The path ahead. इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशनशिप एक मल्टीफैसेटेड टेपेस्ट्री है जो हिस्ट्री, कल्चर, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन के थ्रेड्स से बुना गया है. It is a relationship of immense significance,
not only for the two nations but also for the future of Asia and the world. Despite the challenges, there are compelling reasons for both countries to strive for a more stable and cooperative relationship. Dialogue, diplomacy, and a shared vision for a peaceful and prosperous future, इस relationship की complexities को navigate करने के लिए essential है. Addressing the legacy of historical disputes, managing strategic competition, and fostering economic cooperation are crucial steps in the right direction. The path ahead requires both sides to exercise restraint, build trust, and seek common ground. This journey may be arduous, but the stakes are high. In two Asian giants के बीच, a harmonious relationship holds the key to unlocking immense potential for regional stability and global progress.